Hello everyone, welcome to Apti Place Academy for Civil Services. This is a video on daily news and editorial analysis, which I'll be covering from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So the most important news and editorial of the day would be discussed in this session. Let's get started with today's topic list. Today is 20th of December. The first topic is Election Law Amendment Bill 2021. We'll see what are the changes that has been recommended in this bill. Second, Six Nation call for immediate aid for Afghan. Third is need for better coordinations between NDRF and SDRF. The second last is 60th anniversary of liberation of Goa, and the last is an editorial from Hindu. Can India become a technology leader? We'll see and understand the nuances and lacuna that still existed in technology. Apart from this, there would be some MCQ based questions. These questions would be based on current affairs that will help you for the upcoming prelims examination. So without any further delay, let's get started. And those of you who are new to our channel, do not forget to subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube. If you like this video, if you find this video informative and helpful, do not forget to press a like button. And before I start, just to tell you that we have our IS Gyan application. This is an Android app, updated version 2.0, which will give you a lot more other facilities like live classes, news and article, daily MCQs, video and blogs, and A to Z study material. For more details, the link is there in the description. You can download this app, and this will definitely help you through this journey of civil services. So do check it out. This is a useful app for you. So starting with the first news, that is a news related to the Election Laws Amendment Bill 2021, something which is important for General Studies Paper 2, Government Policies and Intervention and Development of Various Issues Pertaining to its Design and Implementations. So what has happened that the bill was about to table, it was scheduled to be tabled today, that the bill on electoral reform which seeks to link जो इलेक्ट्रल रोल्स है और जो आधार इकोसिस्टम है उसमें जो डुप्लीकेसी चल रही है उसको खत्म करने के लिए बेसिकली ये एक नई बिल लेकर के आई है गवर्नमेंट. इट इज नोन एज द इलेक्शंस और यू कैन से the Election Law Bill 2021 that seeks to allow electoral registration officers to seek Aadhaar number of the people who want to register as voter, right? तो डुप्लीकेसी डबल एक ही इंडिविजुअल के दो वोटर आईडी हैं, वो किसी एक स्टेट से भी वोट दे रहा है, किसी दूसरे स्टेट से भी वोटिंग कर रहा है. सो टू अंडरस्टैंड एंड नो जो बोगस वोटिंग हो रही है उसको रोकने के लिए इस तरह के प्रोविजंस आए हैं. एंड द रजिस्टर्ड हैज टू वोटर दे हैव टू द गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉर एन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ आधार एज वेल एज द वोटर आईडी कार्ड, राइट? तो दोनों की एक इंटीग्रेशन बनाई जाएगी, उसके बाद आइडेंटिटी स्टैब्लिश की जाएगी. Now, what is the aim of this bill? It seeks to allow electoral registration officers to ask Aadhaar number, जो कि person already included है electoral roll में, for the purpose of authentication of the entries into electoral roll. तो अगर आपने अपने आधार नंबर से रजिस्ट्रेशन किया है, then it is good. Otherwise, they will ask you for your electoral ID, right? जो आपकी EID है, उसके साथ दोनों को इंटीग्रेट की जाएगी, right? And it will also identify the registration in name of same person in the electoral roll for more than one constituency. So this problem existed. It was also highlighted by the Election Commission. Now when the bill is there, we can have an opinion that definitely this is going to negate in future. And people who cannot furnish their Aadhaar number would be allowed to present other document to establish their identity, right? तो कुछ अलग provisions भी रखे गए हैं. Apart from other Aadhaar card, some other ID would be valid to prove your identity. Now there would be some changes in the RPA, that is Representation of People Act 1950 में changes की जाएगी और 1951 में क्या क्या changes हैं. The first, according to bill circulated in Lok Sabha, various sections of RPA, that is Representation of People Act 1950 और 1951 दोनों में changes की जाएगी. If you talk specifically about RP Act 1950, तो यहाँ पे linkages की बात की जाए तो section 23 है of the RPA which will amend to allow linkages of the roll data आधार इकोसिस्टम के साथ, ताकि जो मल्टीपल इनरोलमेंट है उसको खत्म की जा सके, राइट? एंड सेम पर्सन कैन नॉट हैव रजिस्ट्रेशन इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट? Now, what are the other changes? That the amendment of section 20 of the RPA Act 50, जहाँ पे section 60 of RPA 51 would be allowed,
and election to become a gender neutral for the general voters. खास करके यहाँ पे ये changes जो हैं, this was also there in the news previously also, जहाँ पे wife के word को replace करके spouse बोला जाएगा, right? So it will help to replace the word wife from the word spouse, making status gender neutral. So if you're writing something with regards to women empowerment, आप इस तरह के examples भी quote कर सकते हैं. Six nation called for immediate aid for Afghan. We have seen the change in the government in Afghanistan after the Taliban overtaking the governance. A lot of concern has been raised for past, several months. But now we'll see how the other important countries, India and Central Asian countries, are looking forward for immediate aid to Afghanistan. Something which is important for General Studies Paper 2, bilateral regional grouping and agreement, evolving India's and affecting India's interest. तो इंडिया के अलावा इंडिया के साथ 5 और सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो है उन्होंने रिसेंटली असर्ट किया है कि ज़रूरत है कि अफगानिस्तान के लिए एक ट्रू रिप्रेजेंटेटिव हो, रिप्रेजेंटेशंस की जाए जहाँ पे इंक्लूसिव गवर्नमेंट को प्रमोट किया जाए. दिस इज द नीड ऑफ द आवर कंसिडरिंग द फैक्ट दैट इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन फॉर अफगान पीपल इज रिक्वायर्ड, राइट? ऑल्दो तालिबान ने जब से ओवरटेक किया है, they have said that definitely will call for more humanitarian approach, but practicality में अगर देखें तो वहाँ पे अभी भी ground reality अच्छी नहीं है. लोगों को काफ़ी परेशानी आ रही है. They are not able to work, they are not able to earn, and even the crisis of food insecurity existed in the region. तो इंडिया सेंट्रल एशिया जो डायलॉग हुई है उसमें क्या क्या बातों पे प्रायोरिटी दी गई है, and what are the highlights that were there. So India, along with other Central Asian countries in this dialogue, they have seeks to form a truly representative and inclusive government in Afghanistan. और ये consensus बनाई गई that a joint statement would be there for third India Central Asia dialogue. So this Central Asia dialogue was third example, right? And it was attended by Foreign Minister of Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan and Turkmenistan. So ये सारे countries के representative थे via their foreign minister who were representing, right? The dialogue proposed for the use of Indian run terminal at Chabahar port in Iran as a route of trade. Definitely very important point, and this will help India and lot more other countries in terms of promoting trade. Now, call for 4C की बात की गई है. ये basically ये जो meeting है इंडिया में हुई है, तो dialogue call for discussion on how to increase the link called as 4Cs. 4C क्या stand करती है? The first is commerce, second is capacity enhancement, third is connectivity, and 4 is contact. So if you're writing in mains paper specifically, you have to quote this, right? So this dialogue also decide to explore establishing joint working group which will address the issues of free moving of goods, services in India across all Central Asian countries. Now अगर बात करें सेंट्रल एशिया डायलॉग की, इट कम्स अ मंथ आफ्टर जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो थे इंडिया के मिस्टर अजीत डोवाल, ही हैज़ होस्टेड अ 5 कंट्रीज मीटिंग इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी डायलॉग. उसके बाद ये उसकी अपग्रेडेशंस की गई है जहाँ पे इंडिया और सेंट्रल एशिया डायलॉग स्टैब्लिश की गई है विच कॉल फॉर मोर प्रोएक्टिव एक्शन इन द अफगानिस्तान रीजन. नाउ ब्रॉड कंसेंसस कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पे बनाई गई है. सो द मिनिस्टर हैज नोटेड that regional consensus is very important in terms of ensuring inclusiveness and sustainability growth of Afghanistan. तो कुछ ऐसे areas हैं जो कि priority list में थी. The first is formation of truly representative of inclusive government. Second, combating terrorism and drug trafficking. As you know, तालिबान की पावर से पहले तालिबान की जो मैक्सिमम रेवेन्यू है वो ओपीएम कल्टीवेशन से आती थी, राइट? चाहे वो चरस हो, गांजा हो, हेरोइन्स हो, these were the important things that used to trade and earn a lot of revenue. तो उनके जो बेसिक सोर्स थे वो इन्हीं चीज़ों से आती थी. तो we have to control because they are in power. Definitely they are going to enhance the level of cultivation which was there. So entire world and the region want to control it. Central role of the United Nations is again something very important, providing immediate humanitarian assistance for Afghan people, and the last but not the least, preserving the right of women, children, other national ethnic group. So these are some of the core priority area upon which the broad consensus between India and other Central Asian country was established. Now अगर इंडिया की बात करें, इंडिया ने काफ़ी असिस्टेंस दी है अफगानिस्तान को बिफोर द तालिबान टुक दिस. उससे पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई है.
अगर 5 पिलर्स पे बात करें जहाँ पे इंडिया ने सपोर्ट की, द फर्स्ट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और कनेक्टिविटी, राइट? So there are a lot more content. You can pause this video and you can read the entire content. कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं. इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट बनाई गई, एक हॉस्पिटल बनाई गई थी. उसके अलावा अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात करें, हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए गए. अफगानिस्तान में नई पार्लियामेंट, इंडिया अफगानिस्तान फ्रेंडशिप डैम जिसको सलमा डैम के नाम से भी जाना जाता है, छाबहार पोर्ट की डेवलपमेंट एंड लॉट मोर अदर स्कॉलर एंड इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और जो रिलेशंस हैं इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स भी किए. You can take the screenshot of this and you can read the entire content under the sections. Now, need for better coordination between NDRF and SDRF. This is something important for General Studies paper 3, various security forces and their mandate. इसके अलावा ये आपके जनरल स्टडीज के पेपर 2 में भी इंपॉर्टेंट है, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन. तो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने ये एम्फेसिस दिया है, देयर इज अ नीड फॉर अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द एनडीआरएफ, दैट इज नेशनल डिजास्टर रिस्पांस टीम, और एसडीआरएफ जो है स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स. इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होने की जरूरत है हर एक इंडिविजुअल स्टेट पे, बिकॉज एट एवरी स्टेट वी हैव एनडीआरएफ एंड एसडीआरएफ टीम डिप्लॉयड. एनडीआरएफ इज ऑल्दो force which is being regulated by the home ministry or you can say the central government, and SDRF जो है वो sole accountable है state government के लिए. So the union home minister argued that unless the two outfit, that is the NDRF, two outfit means these two outfit, and the NDRF and SDRF work in a close coordinations, प्रॉब्लम को नेगेट करना काफी मुश्किल होगा. सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू इंश्योर कि एक वेल स्टैब्लिश्ड वेल स्ट्रक्चर एग्जीक्यूशन की जा रही है किसी भी प्रॉब्लम को लेकर के. Now the Home Minister also argued that the NDRF has to form a team to study all damage of the problem that existed because of the disaster management across the globe. तो आपसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं मेंस में, स्पेसिफिकली दिस इज अ मेंस रिलेटेड क्वेश्चंस, दैट व्हाई एंड हाउ इट इज एसेंशियल टू हैव अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एनडीआरएफ एज वेल एज द एसडीआरएफ टीम्स. नाउ इवोल्यूशंस की अगर बात करें एनडीआरएफ की, व्हिच इज नॉट देयर इन न्यूज़पेपर, दिस इज समथिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो. तो एक जब दो नेशनल क्लैमिटी हुई इंडिया में, फर्स्ट इज उड़ीसा की जब सुपर साइक्लोन आई थी 1999 में, उसके बाद गुजरात में अर्थक्वेक 2001 में. इसके बाद ये रियलाइज हुआ कि हमारे पास एक स्पेशलिस्ट फोर्स की ज़रूरत है जो कि वॉलेंट्रली काम करे, इवन दे शुड वर्क एज अ फोर्स स्पेसिफिकली फॉर अ नेशनल डिजास्टर, राइट. तो उसके बाद डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बनाई गई जिसको स्टैट्यूटरी प्रोविजंस के साथ एनडीआरएफ की जो फोर्स है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स बनाई गई फॉर द पर्पस ऑफ स्पेशलाइज्ड रिस्पॉन्स इन नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स के लिए, राइट. सो दिस इज हाउ द एनडीआरएफ हैव इवॉल्व्ड. और एनडीआरएफ की अगर ब्रांचेस की बात करें, दे आर अक्रॉस इंडिया, राइट. सो इसके कुछ 4 इंपॉर्टेंट फोर्सेज है जहां से डिप्लॉयमेंट की जाती है, बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ एंड आईटीबीपी, राइट. एंड यू कैन सी दिस इज द स्टेट भटिंडा, ग्रेटर नोएडा इन उत्तर प्रदेश, गुजरात के वडोदरा में, पुणे इन महाराष्ट्र, नागपुर में इसकी जो डिप्लॉयमेंट जो बटालियन है वो यहाँ पे ऑलरेडी है, इन पटना, अगेन इन गुवाहाटी, कैलकाटा, मुंडाली इन उड़ीसा, Vijayawada and Tamil Nadu, right? So Akoram is a place where the forces is also particular. So these are the reason जहाँ पे bifurcation की गई है और 10 battalions जो है अलग अलग forces के deployed किए गए हैं. Now SDRF के बारे में भी आपको जानना जरूरी है. SDRF has been constituted under the DM Act, that is Disaster Management Act 2005, and it was primarily a fund which was available for the state government in response to any disaster to meet their expenses, right. कोई natural या man-made disaster है तो उनकी expenses को meet करने के लिए SDRF बनाई गई थी. Contributions की अगर बात करें, 75% contribution जो है that is coming to the state categories and union territories के, 90% कुछ special states जो है उनके लिए दी जाती है, जैसे सिक्किम, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश एंड जम्मू एंड कश्मीर, एंड रेस्ट स्टेट्स गेट द अदर लेवल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, राइट. अदर स्टेट्स को 75 और कुछ स्पेशल स्टेट्स को 90% की कॉन्ट्रीब्यूशन मिलती है. नाउ द एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन इज रिलीज्ड इन 2 इंस्टॉलमेंट एंड द रिकमेंडेशन इज देयर बाय द फाइनेंस कमीशन. 60th anniversary of liberation of Goa, you can say the diamond jubilee.
something which is important for General Studies Paper 2, Functional Responsibility of Union and States. प्राइम मिनिस्टर ने रिसेंटली गोवा विजिट किया टू मार्क द 60th एनिवर्सरी ऑफ लिबरेशंस ऑफ गोवा फ्रॉम पोर्टुगीज इन 1961 और प्राइम मिनिस्टर ने कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की इनॉग्रेशंस भी की रिगार्डिंग द public work project that is estimated to cost around 600 crore almost, right? So बहुत सारे projects की inaugurations की गई है. I'm not getting into detail of that. We'll more understand what is news that is relevant for your examination. Background की अगर बात करें, Goa commemorates the day of the army marches into the state in December 1961. Peacefully bloodless operation की गई जहाँ पे पोर्टुगीज ने अपने एडमिनिस्ट्रेशंस को वापस से गोवा को इंडिया को दे दिया. There was no war in this, right? This was a mutual bloodless operation that took place by Indian Army. After liberations, गोवा के बारे में डिसाइड की गई. गोवा was actually annexed from the Union Territory as was made as Union Territory of Goa and Daman and Diu. पहले गोवा के साथ दमन एंड दीव ये इकट्ठे एक पर्टिकुलर यूटी हुआ करते थे, right? There is no separate UT for Goa and Daman and Diu. Now, consequently, what has happened in 1961, it was decided whether इसको महाराष्ट्र के साथ कंटिन्यू रखना है या नहीं. बट एक प्लेबिसाइड की गई. मैक्सिमम गोवन पीपल ने कहा दैट वी डोंट वांट द मर्जर विथ महाराष्ट्र, राइट? तो इस डिसीजन के बाद गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसको अलग से यूटी बनाई जाएगी. सो इट कंटिन्यू फॉर 1987 एंड फुल फ्लेज्ड गोवा हैज बिकम स्टेट, 25th स्टेट. उसके बाद ये फाइनल डिसीजन में गोवा को स्टेट बनाई गई और दमन एंड दीव कंटिन्यू टू बी द यूनियन टेरिटरी. तो यहाँ से गोवा स्टेट बना दिया गया एंड दिस कंटिन्यू विद द यूनियन टेरिटरी, राइट? Now India can become a technology leader, something which is important for General Studies Paper 2, government policies and intervention for the development of various sectors. So what is under this editorial technology roadmap for India के बारे में बात की गई है. We'll understand theme via 5 important subtopics. The first is an invisible hand. China के क्या experiences हैं, India की क्या जर्नी है, supply and demand factor और कुछ way forward. राइट? तो फिर सी द बैकग्राउंड अगर बात की जाए, जितने भी इंपॉर्टेंट आज वर्ल्ड के टेक जाइंट्स कंपनी है वहाँ पे सब सीईओ जो है मैक्सिमम दैट इज इंडियन ब्रोन टेक, राइट? जितने भी लीडरशिप रोल है वो एक इंडियन कर रहे हैं. बट क्या ये जस्टिफाइड है हमें प्राइड करने के लिए, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंडिया की अपनी जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस है, जो अपनी लेवल ऑफ एनहांसमेंट इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी इज नॉट दैट ग्रेट. सो शुड वी celebrate this, but still this is a point where India need to concern that why are people, despite the fact कुछ ऐसे कंपनीज हैं अभी भी इंडिया में जो कि फॉरेनर यहाँ पे सीईओ है या फिर उसके टीम को लीड कर रहे हैं, बट इंडियन पीपल आर हैंडलिंग सम वेरी गुड बिग जायंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट? चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट की बात की जाए, इवन ट्विटर की बात की जाए, नॉट इन फेसबुक, राइट? एंड गूगल की बात की जाए, दीज आर द कंपनीज वेयर इंडियन आर सी. सो इंडिया की जो फेल्योर है दैट इज लिंक्ड टू इनएबिलिटी टू मेक यूज ऑफ मार्केट ड्रिवन एंड ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज. सो हाउ टू डू दैट, हाउ एक्चुअली ग्लोबली सारी चीजें काम कर रही है, विल अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. तो एक इनविजिबल हैंड टाइटल है, इसमें ये बताया गया कि कैसे यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज जो है वो एक्चुअल सपोर्ट करती हैं प्राइवेट कंपनीज को टू बिल्डिंग एंड फ्लरिशिंग, राइट? However, it is less known that the invisible hand is there by the government. By the government, I mean this is by the United States government. Public sector funding developed की गई एक algorithm that has eventually led for the Google success across the world, right? अब इसके अलावा अगर बात करें चाइना की, the role of government has been more prominent in shaping the economic growth of China. कुछ चाइनीज एक्सपीरियंस अगर देखें यहाँ पे, तो चाइना अचीवमेंट हैज कम नॉट बिकॉज इट टर्न कैपिटलिस्ट, बट ऑल्सो ये कॉम्बिनेशन है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर, मार्केट और ग्लोबलाइजेशन तीनों को इंटीग्रेट की गई, राइट? पब्लिक सेक्टर, मार्केट एंड ग्लोबलाइजेशन हैज बीन इंटीग्रेटेड. Now, China's state-owned enterprises have swift and inefficient way of bureaucratic formations. They have another level of functioning. How they are actually functioning. Even China has a dominance in terms of all state sectors. तो जो वहाँ पे state-owned enterprises है, उसमें भी बहुत हद तक चाइना ने कंट्रोल करने की कोशिश की है. Now, on the one hand, the state retreated the light manufacturing and export-oriented sector, leaving
the field more open to private sector, right? An opportunity was given to private sector to explore themselves given the fact that the backing is there by the government. और कुछ और अगर बात करें स्टेट ओन इंटरप्राइजेस के, दे हैव स्ट्रेंथन देयर प्रेशर बाय स्ट्रेटेजिकली importing some important sectors like petrochemical and telecommunications. India's की अगर जर्नी की बात करें, when actually industrialization take place after independence just 1950 के बाद, it was possibly for more ambitious and such initiative to taken by the world. तो इंडिया ने भी उसी कंसर्न में अपनी डेवलपमेंट को स्टार्ट की. The public sector funding is the latest technology at the time, which include space and atomic research. बाद में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाई गई, which calls for the hallmark of the effort, right? So these IIT actually has proven that yes, India somewhere stands in terms of technology. आज भी जितने भी CEOs हैं ग्लोबल लेवल पे, कहीं ना कहीं वो सारे लोग IIT से पढ़े हुए हैं. एक उनको एक प्लेटफॉर्म मिली. IIT is not a solution. IIT is a platform where people get and basically उनको एक हॉल मिलता है जहाँ अपने आप को वो काफी ज्यादा एक्सप्लोर कर पाते. Now, many of these institutions over the year has attained world-class standard. The growth of information technology in the pharmaceutical industries, fastest in the Bangalore and in Hyderabad cities, right? 1991 के बाद जब post liberalization के बाद बात करें, India has embarked a market and globalization, and it should redouble the efforts that needed for strengthening the technology and capacity. तो 1991 के बाद ग्लोबलाइजेशन के बाद चीजें बहुत हद तक सुधरी 10 सालों तक, बट if you see now the pace that is actually anticipated is not there, right? So instead of spending on research and development in the part proportion of GDP, वो डिक्लाइन किया है. जहाँ पे पहले 1990 के टाइम में जो हमारे रिसर्च और डेवलपमेंट में जीडीपी पे टोटल खर्च हुआ करती थी, दैट जीडीपी के टोटल खर्च पे 0.8% थी आउट ऑफ टोटल जीडीपी, राइट? नाउ आउट ऑफ टोटल जीडीपी इट हैज डिक्लाइन टू 0.65%. देख सकते हो कितनी गिरावट है. इट शुड हैव इंक्रीज एंड इट शुड हैव ऑलमोस्ट 1.5% ऑफ आवर जीडीपी, राइट? जो दूसरे कंट्रीज की अगर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, सो इवन चाइना एंड साउथ कोरिया, चाइना स्पेंड ऑलमोस्ट 2.1% और साउथ कोरिया जो है 4.5% ऑफ टोटल ऑफ देयर जीडीपी आर स्पेंड ऑन द रिसर्च एंड इनोवेशंस. यू कैन सी दीज कंट्री आर डेफिनेटली हैविंग अ बेंचमार्क दैट दे हैव सेट इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी. नाउ सप्लाई एंड डिमांड फैक्टर्स की बात करें, डिस्पाइट सेटबैक्स इंडिया ने कोशिश की है, बट अगेन दिस एफर्ट्स नीड टू गिव अ बैक बाय गवर्नमेंट फाइनेंसेस. ग्रेजुएट के लिए स्टेम्स की प्रोग्राम बनाई गई, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स प्रोग्राम, वेयर ऑल ग्रेजुएट्स वर 32.5% इंडियन, एंड दिस इज हाईएस्ट अमंग द यूनेस्को. जितने भी यूनेस्को की डेटा है और जितने भी कंट्रीज हैं उनमें इंडिया के नंबर 1. Without doubt, India can meet the sharply increased changes on its public spending, improve the quality and access to higher education. So for this, spending and financing is very important. And in overwhelming proportions of tertiary educations की अगर बात करें, जहाँ पे private educations, it was 60% of those who enrolled in the bachelor degree in 2017, and average G20 countries में it was only 33% according to the OECD reports. नो वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, जिस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेक इन इंडिया की इनिशिएटिव्स ली हुई है, दैट इज डेफिनेटली अ लॉन्ग रन में ये इसकी इम्पैक्ट अच्छी होगी, बट वी वांट सम शॉर्ट टर्म मेजर्स आल्सो, राइट? सो टू गो बियॉन्ड इंक्रीजिंग ईज ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर द प्राइवेट इंडस्ट्रीज, वी हैव टू इंश्योर दैट the things are there in the right direction. तो इंडियन इंडस्ट्रीज नीड टू डिपेंड देयर ब्रॉडन टेक्नोलॉजी कैपेसिटीज, जहाँ पे ये भी जरूरी है कि जो यूनिवर्सिटीज और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं that need to strengthen in the area in terms of technology development. At the same time, triple P model पे भी काम की जा सकती है, which can be a short-term solution for the development of the sector, right? And strengthen public sector would create more opportunities for business, private business specifically, and wider the entrepreneurial base in our country, right? So this is how the way forward goes in terms of building a roadmap and technological boom for a country like India, right? So this was all about editorial. We have a course, or you can say the test series on prelims. Those of you who will be appearing for 2022, you can enroll for the prelims test series. This would be supplemented by IAS Gazetted magazines. For more details, you can refer to the description section of this video where I have provided the link, right? Let's move ahead to the MCQ questions. Before I proceed, just to tell you the answers of yesterday questions. For first question, the correct option is C. For second question, the correct option is C. Now,
the practice question for you. This is for the today's questions. The National Mission, Monsoon Mission, it was launched by the Ministry of Environment, Forest and Climate Change. It was developed by the state-of-art dynamic monsoon prediction system, short, medium, and long-range forecast. So this is a question which you can practice at home. Second is Amal Hope mission has been recently conducted by which among the following countries, right? So you have to check and read detail about this as well. So this was all about the daily news and editorial analysis followed by the MCQs. If you have any other concern, do let me know. I'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Thank you so much for watching this video.